that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. नमस्कार। एक पुरानी कहावत है, कौवा कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो हंस की चाल नहीं चल पाता। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भारत की तरह मजबूत बनने की वो लाख कोशिश करता है। भारत के पीएम की तरह इमरान भी दुनिया के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ये कंगाल देश अपनी फजीहत करा लेता है। अब एक बार फिर ऐसा उस वक्त हुआ जब यूएन में इमरान खान ने बोलना शुरू किया। मतलब बिना तथ्यों के, बिना जांच परख किए जो मन में आया बोलते चले गए। अफगानिस्तान का मुद्दा नजरअंदाज कर दिया और खुद को पीड़ित बताकर घड़ियाली आंसू बहाने लगे। यहां तक तो चलिए फिर भी ठीक था। जब बारी आई आगे बोलने की तो हर बार की तरह पाक के वजीर आजम ने कश्मीर का रोना रो दिया। कश्मीर का जिक्र करने वाले पाक पीएम को भारत की तरफ से भी करारा जवाब मिला। भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया, पीओके तुरंत खाली कर दो। दरअसल यूएनजीए की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। सबसे पहले तो जनाब कश्मीर के मुद्दे पर जो भी फैक्ट रखते हुए नजर आए वो सारे गलत थे। फिर बात बनती नहीं दिखी तो भारत सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर वहां के हालातों की हकीकत को इग्नोर करके खुद को पीड़ित बताने लगे। कहने लगे कि कश्मीर के मुद्दे पर बाहरी दखल होना चाहिए। जनाब ये भूल गए कि दुनिया के लगभग हर देश ने यह साफ कर दिया है कि ये दो देशों का आपसी मामला है। खैर, तालिबान के मुद्दे पर अपनी करतूत छिपाने की कोशिश करते हुए नजर आए। बस फिर क्या था, भारत ने पाक पीएम को आड़े हाथों ले लिया। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत की ओर से फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने जमकर पलटवार किया और कहा, इमरान खान आतंकवाद से पीड़ित होने का ढोंग करते हैं। राजनयिक स्नेहा ने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। इसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत ने कहा, पाकिस्तान को तुरंत पीओके खाली करना चाहिए। स्नेहा ने आगे कहा कि इस तरह के बयान देने वालों और झूठ बोलने वालों की सामूहिक तौर पर निंदा की जानी चाहिए। तो देखा आपने, पाक पीएम को यूएनजीए की बैठक में इस तरह का बयान देना भारी पड़ गया। भारत ने फैक्ट्स के साथ पाक पीएम की सारी पोल खोल कर रख दी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region,
In fact, the entire world has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Mr. President, this is also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now Bangladesh. As we mark the 50th anniversary this year of that horrid event in history, there is not even an acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. Dissenting voices are muzzled daily, and enforced disappearances and extrajudicial killings are well documented. Mr. President, unlike Pakistan, India is a pluralistic democracy with a substantial population of minorities who have gone on to hold highest offices in the country, including as President, Prime Minister, Chief Justices, and Chiefs of Army Staff. India is also a country with a free media and an independent judiciary that keeps a watch and protects our Constitution. Pluralism is a concept which is very difficult to understand for Pakistan, which constitutionally prohibits its minorities from aspiring for high offices of the state. The least they could do is introspect before exposing themselves to ridicule on the world stage. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. I thank you, Mr. President.